Assalamu alaikum. Today our topic is a two-dimensional Cartesian form. सपोज कर लें कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर एंड आई और जे जो है वो क्या है यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग द एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं आपके पास वो आई और जे है। यहाँ से आपके पास पोजीशन वेक्टर जो आर है उसकी वैल्यू क्या बनती है एक्स आई प्लस वाई जे and capital F is equal to capital X into I plus capital Y into J. एक्स वाई यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट है फोर्स के एक्सेस के क्रॉसपोंडिंग द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी के अंदर जो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है देन फ्रॉम इक्वेशन 9.3 वी फाइंड एम और डबल डॉट बराबर है एम इंटू एक्स डबल डॉट आई प्लस वाई डबल डॉट जी और ये इक्वल होगा कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई। यहाँ से जब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को तो एम एक्स डबल डॉट बराबर होगी कैपिटल एक्स की एंड एम वाई डबल डॉट बराबर होगा कैपिटल वाई की। Equations 9.4 are called the Cartesian equations for the motion of particle under consideration. ये 9.4 जो है ये कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है। उन पार्टिकल की मोशंस के लिए जिनको हमने कंसिडर किया हुआ है। V is equal to R dot is equal to X dot I plus Y dot J. The speed V is given by V square is equal to X dot का square plus Y dot का square. Example number 1 है हमारे पास a particle moves in such a way that its position vector at time t is R is equal to a cos n t into I plus b sin n t into j. नेक्स्ट है हमारे पास टू डायमेंशनल पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को पोलर फॉर्म के अंदर टू डायमेंशन में हमने डिस्कस करना है। सपोज दैट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज restricted to xy plane and r theta are the polar coordinates of the particle। जो पार्टिकल की मोशन है उसको एक्स वाई प्लेन में रखा गया है और आर थीटा क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स के पार्टिकल हैं। Then as seen in article 7.5 the radial and transverse components of its acceleration are given by a r equal है r डबल डॉट प्लस r इंटू थीटा डॉट का स्केयर एंड ए थीटा जो है ये इक्वल होगा टू r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। If r unit vector and s unit vector are the radial and transverse unit vectors, then the equation 9.2 gives m into r double dot minus r dot r into
theta dot का square into r unit vector plus m into 2r dot theta dot plus r theta double dot into s unit vector. F r into r unit vector plus f theta into s unit vector, where f r and f theta stand for the radial and transverse component of the force. Hence, m into r double dot minus r into theta dot का square ये equal है f r के, and m into r dot 2r dot theta dot plus r into theta double dot equal होगा f theta. These are the equations of motion in polar coordinates. For a particle moving along a circle of radius a with center at O, पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कल के गिर्द जिसका रेडियस ए है और उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, उसमें r इक्वल है a के r डॉट जीरो के r डबल डॉट से जीरो. If a force capital F having radial and transverse components f r and f theta act on it, the equations of motion are m a into theta dot का square equal है minus f r की, and m a into theta double dot बराबर है f theta. एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास. A particle of mass m moves on xy plane under the force F is equal to minus k over r की power 4 into r, where r is its distance from the origin. पार्टिकल का मास m में जो मूव करता है एक्स वाई प्लेन में और फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, r का डिस्टेंस है ओरिजिन o से. If it starts on the positive x-axis at a distance a from o, origin से a डिस्टेंस के ऊपर अगर ये स्टार्ट करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से with speed v2 in the direction making an angle alpha with positive s direction, prove that at time t r double dot is equal to m a square v naught square sin square alpha minus k divided by m r cube. यहाँ पर r is equal to r into r unit vector and f is equal to minus k over r cube r unit vector. By the equation m into r double dot minus r into theta dot square is equal to minus k over r cube. M into 2r dot theta dot plus r theta double dot is equal to 0 हो जाएगा. Later equation can be written as 1 over r d over dt into r square theta dot is equal to 0. R square theta dot is equal to h, where h is a constant of integration. Now at t is equal to 0, the radial and trans-radial component of velocity is along x-axis and transverse component along y-axis. V equal हो जाएगा r dot r unit vector plus r theta dot s unit vector time at t is equal to 0 is v is equal to v naught is equal to r dot and r is equal to a.
r unit vector plus r theta dot into r is equal to a into s unit vector. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, v नॉट cos alpha into r unit vector plus v नॉट sin alpha into s unit vector. अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो r डॉट इज इक्वल टू r डॉट इंटू r इज इक्वल टू a बराबर होगा v नॉट cos alpha के। इसी तरह r थीटा डॉट इंटू r इज इक्वल टू a बराबर होगा v नॉट sin alpha के। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, थीटा डॉट इक्वल थीटा डॉट इंटू r इज इक्वल टू a बराबर होगा v नॉट ओवर a इंटू sin alpha, so that h minus r square theta dot is equal to r square theta dot into r बराबर है ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर v नॉट साइन अल्फा और a इक्वल है a इंटू वी नॉट साइन अल्फा। थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई a v नॉट साइन अल्फा बटा r स्क्वायर। Hence, and the first equation of motion r double dot is equal to minus k over m r cube plus r theta dot का square is equal to minus k over m r cube plus a into v naught square sin square alpha divided by r cube 1 over equal होगा 1 over m r cube into m a square v naught square sin square alpha minus k।